स्टार्ट करवा जाभा प्रोग्रामिंग उपरे कोर्स। तो फर्स्ट आम जानिबा व्हाट इज जाभा। जाभा कौन? तो जाभा इज ए हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज designed to have as few implementation dependencies as possible। तो जाभा गोटे कौन? गोटे हाई लेवल class based object oriented programming language। It is platform independent due to the Java virtual machine जहाँ को हमें JVM बोले एड्रेस करे। JVM प्राई जाभाटा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो आम आज आसवा सेकेंड क्वेश्चन को, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जाभा। तो जाभार किसी फीचर्स हम डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट हूँ जाभाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, platform independent, simple and secure, robust and portable, multi-threaded and high performance। कौन कौन फीचर्स रोचे जाभार? फर्स्ट हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देन हमारा थर्ड फीचर हूँ सिंपल एंड सिक्योर, फोर्थ वन हूँ रोबस्ट एंड पोर्टेबल, फिफ्थ वन multi-threaded and the last one is high performance। तो आम आसवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो जेडीके, जेआरई और जेवीएम कौन? तो जेडीके हूँ जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट माने कौन? It includes tools for developing Java programs। तो Java development kit रे किसी tools थाए जोटा कि Java program को develop करने पे यूज़ करा जाए, जेमती कि compiler, debugger etc। तापर आसीबा JRE रो फुल फॉर्म होची Java Runtime Environment। Java Runtime Environment। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कौन? इट प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज एंड जेवीएम टू रन जावा प्रोग्राम्स। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कौन करे? लाइब्रेरीज प्रोवाइड करे और जेवीएम टू रन जावा प्रोग्राम्स। तो आम भी जाना जेवीएम कौन? जेवीएम हूँ जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन को आम जेवीएम बोले एड्रेस करुचे। तो इट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो जेवीएम कौन करे? जावार बाइट कोड को एग्जीक्यूट करे आउ जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर व्हाट इज बाइट कोड इन जावा। तो जावा रे बाइट कोड कहले आम कौन बुझा? बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर। तो बाइट कोड कौन? गोटे इंटरमीडिएट कोड जहाँ जावा कंपाइलर द्वारा जनरेट होता है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। बुझिपार कि जावा बाइट कोड क्या कह जाए? बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर जे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और जेवीएम द्वारा एग्जीक्यूट भी हुए। तो व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रो मेन प्रिंसिपल्स कौन? जोटा को आम उप बोली कहुचे तार मेन प्रिंसिपल्स डिस्कसन करवा। फर्स्ट हूँ एनकैप्सुलेशन, सेकेंड हूँ इनहेरिटेंस, थर्ड हूँ पॉलीमॉर्फिज्म एंड लास्ट वन हूँ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये चारिटा मेन प्रिंसिपल्स तार रही। फर्स्ट वन एनकैप्सुलेशन, सेकेंड वन इनहेरिटेंस, थर्ड वन पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्शन। आम नेक्स्ट वीडियो रे उप्स कॉन्सेप्ट उपरे ब्रीफली डिस्कस करवा। जदि वीडियोटी भल लगिला देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबो। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।